मेरे lectures तो session. Okay, I think I'll share the screen now. You please tell me if the screen is visible or not. Yes, ma'am, it's visible. It's visible. Okay, all right. Then we start with this new answer, which is strategies to overcome resistance to change. Students, in the previous answer, we have seen that, several reasons employees are not, accepting changes happily. In fact, they are resisting. Resisting means they are not ready to accept the changes. There were so many causes: social factor, psychological factor, economic factor, and so on. Okay, that employees are not happily accepting the changes. But then we already know, and in fact, we have studied in unit 1 that change is very important. Okay, you have to accept changes at a given point of time. In fact, a change is something which is always going to be constant. Okay, so at a given point of time, if the organization requires to introduce changes, it has to introduce changes. One cannot just stop it. Let us correlate to the current situation. We were already meeting in the college. Last week, we had our lectures in the college. We all were meeting each other. It was such a happy moment, such a good time. We were celebrating cultural fest. All of a sudden, since the cases were rising, we were asked to come, to shift back to completely online. Now, students, though we like it or though we do not like it, okay, for the purpose of safety, okay, and to follow government protocols, we have to accept this change. Similarly, in companies also, certain changes are definitely going to drain the employees, but then they have to understand that these changes are meaningful. It has a purpose. कोई कारण है कि कंपनी ये changes introduce कर रही है. Okay, let us see how will the company tackle if the employees resist to changes. Who is going to read that? Anyone? महक हो क्या आप सेशन में? महक is there? मैम महक का कनेक्शन बराबर नहीं. Okay, कौसर बेटा रीड करो. Okay, ma'am. Strategies to overcome resistance to change. After having identified the type of change resistance present in the organization, manager must employ a ma'am blur आ रहा है screen. Mix of strategies. अभी दिख रहा है? Okay, mix of strategies. Yeah, ma'am. Mix of strategies to counter the negative forces. Ma'am, continue. Okay, first let us understand this paragraph. First paragraph क्या बोल रहा है? That management has to, identify mix of strategies. Do you know what is mix of strategies? मतलब एक ही तरीके से हम लोगों को convince शायद नहीं कर पाए. So we have to use some mix of strategies, especially to those, negative forces. Okay, मतलब what if the employee is forming groupism? Okay, what if the employee is, bringing a trade union threat to the management? तो इस तरीके की negative forces के लिए 100% management has to introduce mix of strategies. I think सबसे पहला तरीका क्या होगा? You try to talk to your people, to your employees. Okay, and nothing is better than their participation and their involvement. कि प्यार से समझाने की कोशिश जितना करोगे, I think your employees would cooperate. But there might be chances that all the employees wouldn't cooperate in this method. So you can then approach another strategy. Okay, so mix of strategy मतलब अलग अलग तरीका अपनाना होगा. Okay, so that employees के ये resistance को हम overcome कर सके. Okay, Kausal, continue. Following are 6 strategies for dealing with change resistance in order from least to most extreme that can be used to develop actions plan that address the resistance within an organization. Okay, I think this answer is going to start from the simple strategy. सबसे पहले, I think this is what we do, right?
कोई कोई कुछ होता है, कोई प्लान होता है, तो आप पहले स्ट्रैटेजीज बनाते हो. फर्स्ट यू प्लान आउट और फर्स्ट यू चॉक आउट द सिंपल स्ट्रैटेजीज. If they are not working out, then you are going to frame some different strategies. So we are going to go from least to the most extreme. Point number 1 includes education and communication. Okay, Kausar. Education and communication. One of the simplest technique and best way to overcome resistance to change is to educate people about the change effort beforehand. People can be made aware with the nature and process of change. Counseling and training can be used to change the basic values and attitudes of people. Ma'am, Okay, beta, continue. continue. हाँ जी, yes. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Upfront communications and education help employees see the logic in the change efforts. This reduces unfounded and incorrect rumors concerning the effect of change in the organization. The main advantage of this method is that once convenienced, people themselves would help in the implementations of change. However, it is the time-consuming method that requires continuous education of those affected by the change. Okay, now let me first take emojis. Okay, all right. Yeah, so the first method is education and communication. Okay, now this is suitable students in case the company size is small. अगर आपका company छोटा है और ज़्यादा 80-100 employees है तो ठीक है, you can start with education and communication, and you can obviously make your employee understand and convince them. Okay, make them understand the efforts that is required behind the change, the purpose of change. Okay, but students, don't you think this is very time consuming? Imagine for a large organization, big companies, where the number of employees are so many, तो आप क्या सबको बिठाकर एक्सप्लेन करना, कन्विंस करना, क्यों चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसका पर्पस बताना, डोंट यू थिंक इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम? Yes, ma'am. है ना? It's going to be very time consuming. So therefore, this method of education and communication is fine for small size organization. For large size organization, it comes with a limitation because it is because it's very difficult to keep on educating and communicating through training and development to so many number of employees. So point number 1 is education and communication. Of course, it also includes counseling methods. Okay, काउंसलिंग से अच्छा ना जब आप किसी को बिठाकर बहुत देर तक समझाते हो. ओके, उसके माइंड में अगर कुछ रूमर्स है चेंजेस को लेकर, ओके, ये चेंज के वजह से शायद मेरी जॉब चली जाएगी, कंपनी के अंदर ऐसे रूमर्स स्प्रेड हो रहा है, तो ऐसे एम्प्लॉयज को काउंसिल भी कर सकते हो. बट दिस इज अगेन आई एम रिपीटिंग suitable for small size companies where the number of employees are less. तो आप उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, काउंसलिंग, एजुकेशन करके you can inform them about the purpose of change, but it's very time consuming. So ये method ये एकदम we already stated. Now we're going to start from the least to extreme. तो सबसे least ये method है कि आप यहाँ से शुरू कर सकते हो by first informing and communicating the change. I'm so sorry I skipped the first paragraph. यहाँ पे ऐसे भी लिखा हुआ है beforehand, यानी कि शुरू में ही अगर आप एम्प्लॉय को बता दोगे that you are planning to introduce changes, I think you will get a support for a long term. Okay, आधा आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि changes are to be introduced. Okay, and then you are informing the employee after a very long time. Okay, तब तो एम्प्लॉय को है ना ऐसा फील होगा कि कुछ तो कंपनी वाले लोग सीक्रेट रख रहे हैं मेरे से, एंड दैट शुड नॉट हैपन. ओके, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, शुरू से ही आपको एम्प्लॉय को मेक अवेयर करना है दैट द कंपनी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस changes. Moving to the second one, which is very important, which states participation and involvement. Okay, Kausar, you can continue. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Participation and involvement. When employees are involved in the change effort, they are more likely to accept change rather than resist it. The management should discuss the change when the subordinate because people who have an opportunity to participate in the discussion making will have a positive feeling about the change. This approach is likely to lead to a more committed and dedicated workforce and lower resistance.
The main advantage of this method is that people who participate will be committed to implement. Okay, we'll turn to the next page, but I'll just explain you meanwhile कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Participation and involvement. Students, I think when your employees are involved from the beginning, शुरू से ही अगर आप अपने employees को involve करेंगे ना, they would have a positive approach towards change. Okay, what is positive approach? वो डरेंगे नहीं कि ये change शायद मेरा job चला जाए. You know, they'll not get into any rumors. To always involve your employees. Okay, in fact changes को introduce करते time अगर कोई decision making है और उसमें अगर employee involved है ना, I think your employees would never resist to change. Okay, they will accept it with all happiness. So it is better advisable to always and always involve your employees, okay, right from the beginning. And in fact involve ही नहीं, okay, उन्हें participate करने दो. Okay, involving is different and letting them participate is different. Okay, involve मतलब आप उनको शुरू से inform कर रहे हो, and participate मतलब inform करते करते आप उनको ये भी बोल रहे हो कि आप अपना ideas बताइए कि क्या decision लेना चाहिए. You also share us and tell us what we should do. Okay, in that case the employee feels very happy and contented. Plus एक employee को secured feel होता है कि अरे मैनेजमेंट मुझसे डिसीजन पूछ रहा है, मेरा इन्वॉल्वमेंट मांग रहा है. तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल विल नॉट रेजिस्ट टू चेंजेस, नो मैटर हाउ ड्रामेटिक या हाउ बिग द चेंज इज. कितना भी बड़ा चेंज होने दो, अगर आप एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करेंगे और उनके पार्टिसिपेशन को एनकरेज करेंगे, डेफिनेटली दे विल कोऑपरेट. ओके, I'm sharing the screen and we move to the next page. All right. Okay, I'm so sorry. I think I have taken the wrong Yes, image. ma'am. मतलब स्टूडेंट्स, आई इन शॉर्ट इफ आई टेल यू, अगर चेंज माइनर है और ज्यादा डेंजरस नहीं भी होगा एम्प्लॉयज के लिए, फिर भी वो रेजिस्ट करेंगे अगर आप उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते हो. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड अगर चेंज बहुत मेजर है, बहुत ड्रामेटिक है, शायद बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन फिर भी अगर आप एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हो, उनके पार्टिसिपेशन को एनकरेज करते हो, you know what, they will cooperate. This is psychological. Okay, very much psychological. People like to be involved. Okay, I'm sharing the screen again. Please tell me if the screen is visible. It should be. Yes, ma'am, it's visible. Okay, beta, continue. Change and any relevant information they provide will be integrated into the change plan. However, it can be time consuming if participators design an inappropriate change. हाँ, now listen to this very carefully. हम ना least to extreme पे जा रहे हैं. Least में हमने सबसे first point क्या देखा? Education and communication, right? Where you are informing your people. Second हमने क्या देखा? Involvement and participation, where you are allowing your employees to give their inputs. Okay, वो अपना वो भी अगर कोई strategy बनाना चाहते हैं या फिर change process में कोई decision making में अपना inputs देना चाहते हैं, तो you can encourage them. Now, but the disadvantage of this method is, although it is going to be advantageous कि आपके employees आपको cooperate कर रहे हैं, लेकिन major disadvantage क्या है? Again, it is very time consuming, number one, and number two, what if participators यानी जिन्होंने जो एम्प्लॉयज ने सजेशंस दिया है या दे रहे हैं, वो काफी कॉम्प्लेक्स है और इनअप्रोप्रिएट है. इनअप्रोप्रिएट मतलब नॉट सो करेक्ट. ओके, इट इज नॉट अ करेक्ट प्लान और अ करेक्ट स्ट्रेटजी. तो ये केस में क्या होगा? अगेन इट इज गोइंग टू मेक द मैनेजमेंट into the redesigning of plans, which eventually हो सकता है बाद में जाके resist कर सके employees. I think मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. सो व्हाट हैपेंस इज, मैं क्या कर रही हूँ, आप सारे मेरे एम्प्लॉइज हो, मैं आप सबको बुलाती हूँ और मैं बोलती हूँ देखो अभी ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस करना है, आप सजेशन दीजिए. तो अभी मैंने आपसे जब सजेशन पूछा
ओके हो सकता है फरहान, सरिता, आदित्य, इन लोग सबने मेरे को बहुत सारा सजेशन दिया, लेकिन वो सारे सजेशन है ना इनअप्रोप्रिएट है। इनअप्रोप्रिएट मतलब इट इज नॉट अ करेक्ट सजेशन। ओके, अब मैं डायरेक्टली उनको तो बोलूंगी नहीं कि दिस इज नॉट अ करेक्ट सजेशन। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना प्लान इंट्रोड्यूस करूंगी। तो जब मैं अपना प्लान इंट्रोड्यूस करूंगी तो बहुत मुश्किल से जो मैंने आप सबका ट्रस्ट जीता था, ओके, बाय इन्वॉल्विंग यू, फिर बाद में आप लोग को जब पता चलेगा कि बॉस ने तो अपना ही प्लान इंट्रोड्यूस किया है, डोंट यू थिंक आप हर्ट होंगे, आपको बिट्रेयल फील होगा, एंड देन यू विल रेजिस्ट, करेक्ट ना स्टूडेंट्स? Yes. Yes, ma'am. Yes. So it might create resistance later on because जो suggestions participators ने दिया है, अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको बाद में एम्प्लॉयज रेजिस्टेंस मिलेगा। दे माइट फील कि जब हमने सजेशन दिया तो आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, मतलब डेफिनेटली ये चेंजेस हमारे जॉब को कुछ ना कुछ थ्रेट जरूर देगा। सो दिस इज हाउ employees might start interpreting the new changes. Moving on to the third one, which includes education and training. Okay, Kausal. Education and training. In order to successfully implement the change, subordinate must be taught new skills, develop change attitude, given the information they need to understand where they fit into the pictures and how they will be expected to operate under the new setup. The education process can be added by training classes, meeting and conferences. Okay, I think this is quite repetitive of the least method that we have studied in point number 1. Education and communication था वहाँ पे, यहाँ पे education and training है. Okay, so here you can I'm so sorry. Okay, here you can inform your subordinates the purpose behind introducing the changes, and then आप training के जरिए अपने employees को make an understand करा सकते हो कि उनका क्या रोल होगा, ओके, वो कैसे फिट हो रहे हैं, and what are the expectations from them. Okay, so through education and training, you can introduce changes. Although this method again has its own limitation, even if it is not mentioned in the textbook, this methods includes training classes, meetings, and conferences, which is going to be very time consuming. I'm sorry. Okay, we move on to point number 4, which is facilitation and support. Facilitation and support. Managers can head off potential resistance by being supportive of employees during difficult times. Managerial support helps employees deal with fears and anxiety during a transition period. Emotional support is provided by showing personal concern to the subordinate during periods of stress and strain. This approach is concerned with provision of special training, counseling, time of work. The main advantage of this method is that approach works very well with adjustment problem. However, it can be time consuming, expensive, and still fail. Okay, now this is very interesting. I think this can be a very successful method of introducing, a strategy in overcoming the resistance. It says facilitation and support. I think top management can play a very active role by extending emotional support to the employees during the transition period. Okay, what is transition period? जब changes introduce हो रहा है तो एम्प्लॉय शायद स्ट्रेस में है, टेंशन में है, ओके, सो मैनेजमेंट कैन extend the emotional support, okay, can give them counseling, can help employees deal with their fear and anxiety, okay, can spend some more time with them, okay, उनके स्ट्रेस को हैंडल करना, okay, management can definitely take up this strategy. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है, employees would feel very important, okay, उन्हें ऐसा लगेगा okay, top management is counseling me, top management is handling my fear, anxiety and stress, which is very nice thing. मेरे को ऐसा बहुत खुशी होगा ना कि अरे वाह क्या बात है, management is supporting, is facilitating. However, students, it is very time consuming, of course, very expensive also. And lastly, it will still fail.
ओके हो सकता है इतना काउंसलिंग किया, इतना स्ट्रेस हैंडल किया ट्रांजिशन पीरियड में, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, टाइम दिया इतना एम्प्लॉय को, फिर भी आगे जाके चांसेस आर दैट एम्प्लॉय माइट रेजिस्ट। तो मेजर डिसएडवांटेजेस, एक तो एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग है, बट देयर इज नो गारंटी कि रेजिस्टेंस ओवरकम हो ही जाएगा। चांसेस आर देयर दैट स्टिल द एम्प्लॉयज वुड resist. Okay, so that is facilitation and support. Any difficulty till here, students? Fast जा रहे हैं क्या? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। Oh, very basic answer and very simple strategy. एक बार आप मेरे को बताएंगे what is strategy 1? Come on, first strategy क्या था? Education and Education and एजुकेशन एंड communication. कम्युनिकेशन। very nice. उसके Education बाद and में communication. second strategy क्या था? Participation and involvement. पार्टिसिपेशन एंड हाँ, तो फर्स्ट स्टेप में आपने लोगों को एजुकेट किया, उन्हें कम्युनिकेट किया, बहुत टाइम स्पेंड किया, तो डिसएडवांटेज। फिर सेकंड क्या था, आपने लोगों को इन्वॉल्व किया, विच इज अ गुड थिंग, पीपल वुड हैप्पीली एक्सेप्ट चेंजेस। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या था कि लोग यानी एम्प्लॉय जो सजेशन दे रहे हैं उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया, आगे जाके वो डेफिनेटली रेजिस्ट करेंगे। फिर स्टेप थर्ड स्ट्रेटेजी क्या था? एजुकेशन एजुकेशन एंड एंड ट्रेनिंग। यस, Training. ओके, जहाँ पे आपको एम्प्लॉय को एक्सप्लेन करना है कि उनका रोल क्या होगा एंड उन्हें अपने एक्सपेक्टेशंस बताने हैं। फिर स्टेप नंबर 4 या फोर्थ स्ट्रेटेजी क्या था? फैसिलिटी एंड सपोर्ट। Facilitation and Yes. support. Okay, extending emotional support to your employees. आप ना जब सेमेस्टर 6 में पहुंचेंगे ना टीवाई में, तो यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड इमोशनल लेबर। ओके, एचआर में वन ऑफ द कोर एरिया, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहाँ पे ना इमोशनल लेबर का मीनिंग, इसी यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ओके, you come with emotions at the workplace also. For example, morning में अगर आपका किसी से disagreement हुआ है, आपने घर में argue कर लिया, fight कर लिया, okay, and then you're reporting to the workplace. Guys, you're going to carry that emotion with you. आप चाहे अपने आप को जितना mentally strong बनाओ या जो भी, आप है ना वो irritation, वो annoy, वो जो घर में जो माहौल हो चुका है, वो अपने साथ में अपने दिमाग के अंदर कैरी करते हो एट वर्क प्लेस, विच इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ वर्क। ओके, क्योंकि अगर आपका मूड खराब है तो क्वालिटी ऑफ वर्क विल नॉट बी दैट फाइन, है ना। एंड देन एट वर्क प्लेस यू माइट मेक मिस्टेक्स। तो इमोशनल लेबर का मीनिंग क्या है पता है? यू शुड ऑलवेज disassociate your personal emotions and be very professional at the workplace. Of course, it's very challenging क्योंकि it is very difficult to remove your personal emotions wherever you are. Okay, तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है ये ट्रांजिशन पीरियड में, जब लोग चेंजेस की तरफ बढ़ रहे हैं ना, डेफिनेटली उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा। ओके, दे माइट बी एंड दे माइट आल्सो हैव एंजाइटीज। ओके, तो उस टाइम पे मैनेजमेंट कैन सपोर्ट देम, कैन काउंसिल देम। ओके, बट हाउएवर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, एक्सपेंसिव भी है क्योंकि मैनेजमेंट खुद काउंसिल कर रहे हैं। हाउएवर देयर इज नो गारंटी कि भाई डेफिनेटली लोग इस चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे ही। दे माइट स्टिल नॉट एक्सेप्ट एंड इवेंचुअली इट माइट स्टिल फेल। आई होप वेरी सिंपल आंसर। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट लेक्चर यस किसका है मैम। आपका? ओके बेटा, हु इज हैविंग द नेक्स्ट लेक्चर? आई मीन हुज लेक्चर इज नेक्स्ट? Navina ma'am. Navina ma'am. Okay, then I think I stop here because point number 5 अगर मैं start कर दूंगी, it will take a lot of time. So I stop here and we continue in the next class and we meet soon. Of course, Okay, online. I ma'am. know you don't like online, but there's no other way out. अच्छा, आप लोग का attendance मेरे को एक second mark कर दूंगा. Let me check if the Microsoft. So we are planning to take your attendance also online. We have this app, लेकिन है ना वो अभी तक आप लोग का डेटा कॉन्फ़िगर हुआ नहीं है उसमें। ओके, इट्स नॉट कॉन्फ़िगर्ड। कोई नहीं, तो मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। थैंक यू मैम। Hey, wait, wait, डोंट लीव, लेट मी जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। यू आर मोस्ट वेलकम, जस्ट वेट।
Farhan, Rakila, Gauri, 34, Subhashini, 41, 5, Aditya, 25, Mojis, Sejal, 24, Sarita, Jesse. All right, guys, you all have a nice day ahead and I meet you soon. Any questions to me? No, ma'am. No, Okay. ma'am. Okay, guys. No, ma'am. मैम महक भी थी लेक्चर में, उसका नेटवर्क इशू हुआ तो अभी लीव हो गई. अच्छा, ओके, उसका रोल नंबर पता है? अच्छा, महक सुरवे है ना वो? यस मैम. ठीक है, डन. I've marked her. Okay, thank you, Farhan. All right, guys. Bye bye. थैंक यू मैम. Bye, ma'am. Thank you, Bye. ma'am. Ma'am, thank you. Welcome. Bye bye.